नमस्ते बच्चों, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम आपकी मैथ की वर्कशीट नंबर 26 पढ़ने जा रहे हैं, क्लास 10th की। लास्ट क्लासेज में हम पढ़ रहे थे आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। आज पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने स्टार्ट किया था। आइए आज की वर्कशीट आपकी क्या कहती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू रिकॉल। पिछला जो आपने पढ़ा उसे कुछ याद करते हैं। द डिस्टेंस d between 2 points P and Q is given by, you remember? Yes, you can write easily. The formula of distance is x minus x, means difference of the x coordinate and difference of the y coordinate. 1 और 2 आप उसमें कहीं भी लिख सकते हैं। तो x2 minus x1, y2 minus y1 उनका होल स्क्वायर, देन एडिंग, देन स्क्वायर रूट। ये आपका फॉर्मूला था। एंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी एक्स वाई फ्रॉम ओरिजिन 0 0, देन आपके पास जो सेकंड x है वो 0 0 है, देयरफॉर x माइनस 0, y माइनस 0 उसका स्क्वायर, देन एडिंग, देन स्क्वायर रूट। ये आपका हुआ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। यहाँ पर आप 1 और 2 लिख लीजिए, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1। वो आप किसी को भी लिख सकते हैं। नाउ बॉय से कैन वी अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला इफ वी टेक मोर देन 2 पॉइंट्स? ओह यस, डिस्टेंस फॉर्मूला इज अप्लाइड फॉर एनी नंबर ऑफ पॉइंट। आप डिस्टेंस फॉर्मूला कभी भी अप्लाई कर सकते हैं, 2 से ज्यादा पॉइंट होने पर भी। बस हम 2 पॉइंट में उनको लेके उनके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। तो 3 हो, 4 हो, कितने भी पॉइंट हो, how many points are there doesn't matter, we can find the distance formula every time between any 2 points. Now case 1, one point is equidistant. Example 1, find a point on x-axis which is equidistant from the point A and B. Point on x-axis means this value of x, but y is always equal to 0 on the x-axis. So since the point lies on the x-axis only, therefore x0 is the point of required point. We take it point as C, which is equidistant from A and B. It means let it be any point C, let it be any point A and point B. Then the distance AC, let it be AC, and the distance between BC. This AC and BC is equal to each other. Now apply distance formula. We can use the coordinate difference between the x-axis and y-axis. Therefore x minus, already point is minus 2, therefore minus minus plus, then point is x plus 2 whole square plus 0 minus 5 whole square is equal to x minus 2 whole square, 0 plus 3 whole square, and no doubt square root also is there. But when we squaring both sides, or you can say when taking square root both sides, then square root sign cancelled. Therefore, we have x plus 2 whole square plus minus 5 whole square. Minus 5 whole square means 25. And x plus 2 whole square means, using the formula a plus b whole square. A plus b whole square, yeah, you remember. A square plus 2ab plus b square. Yes. Therefore, x square plus 2 into 2 into x, 4x plus 4. And similarly x square minus, when we use minus, then here is minus. The x square minus 2 into x means 2 to the 4x plus 3 ka whole square 9. X square both side cancelled, and 4x, this minus 4x when transposed this side, then 4x plus 4x 8x, and 9 minus 25 minus 16, and we can find x is equal to minus 2. Therefore, the point is minus 2 and 0. This is the point on x-axis which is equidistant from the point, given point A and B. It's very simple. आसान है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अच्छे से करें, अच्छे से समझें, बहुत ही सिंपल है। Second example, find a relation between x and y so that the point xy is equidistant from the point this
and this. Relations means at the last of the question, we will get a equation in the form x and y. This is called the relation. Let point P, x, y be equidistant from the given point M and N. Let it be M and N, A, B, whatever you can say. Therefore, P, M must be equal to Pn. And again, using the distance formula, this is same process. The difference between the coordinate axis, then square, then adding, then square root. Same as goes in example 1. 3 minus x whole square plus 7 minus y whole square. Then taking square root. 5 minus x square plus 4 minus y square. Again cancelling the square root both sides. Therefore, we will get 3 whole square means 9. 2 into 3x, 6x plus x square using the formula a minus b whole square plus 7 square 49 minus 2 into 7 into y 14y plus y square is equal to 25 because 5 square minus 2 into 5 into x. This is 10x and plus x square, and similarly 16 minus 8y plus y square. X square again cancelled because both sides is x square. Y square also cancelled. And we have minus 6 minus 14y plus 10x plus 10y. सारा एक्स वाई एक तरफ रखा है और नंबर जो थे वो सब एक तरफ रख लिए है. तो आप ट्रांसपोज करेंगे, इधर से उधर ले जाते समय माइनस का प्लस, प्लस का माइनस आप ट्रांसपोज में करते हैं. Then we will get 4x plus y is equal to minus 17, and this is our required relation between x and y under some given conditions. Now the second case, collinear of triangles. कोलिनियर मीन्स एक ही लाइन पर कॉमन होना पॉइंट का. इफ दिस इज ए लाइन, इट इज गिवन आल्सो लाइन एंड दीज पॉइंट्स ए बी सी. इफ ए बी सी एग्जिस्ट ऑन द सेम लाइन, देन ए बी प्लस बी सी मस्ट बी इक्वल टू ए सी. वेर एवर ए बी सी आर देयर, वो कहीं भी हो सकता है. आप ए इधर लिख सकते हैं, उधर लिख सकते हैं, वट एवर द डिस्टेंस, बट the sum of two line segment, two distance must be equal to the third distance. And these points form a triangle also. It is given when the sum of two sides is always greater than third side. ये inequalities आपने पहले सीखी है last classes में. The sum of two sides in any triangle is always greater than third side. But यहाँ आपको निकालने के लिए ऐसे तीनों को बार बार करने की जरूरत नहीं है बच्चों. आप एक दूसरा रिजल्ट यूज कर सकते हैं कि द ग्रेटेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट साइड मस्ट बी लेस देन द सम ऑफ अदर टू साइड. तो आपको एक ही बार में चेक करने से काम चल जाएगा. यहाँ तो गिवन नहीं है अभी व्हाट इज ए बी, व्हाट इज बी सी, व्हाट इज ए सी. बट जब आप क्वेश्चन करेंगे और वहाँ न्यूमरल्स में जब होगा, नंबर्स जब होंगे, तो आप देखें जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड आपको दिखाई दे रही है, वेदर इट इज लेस देन द सम ऑफ अदर टू साइड्स और नॉट. If it is less than sum of the other two sides, then it must be a triangle. Otherwise, it is not a triangle. Okay. Now, example 3. Find the type of the triangle formed by PQT. You know the type of triangles are equilateral triangles if all sides are equal, isosceles triangle if two sides are equal, and scalene triangle if no sides are equal. Okay. Now, using the distance formula, we will get PT, TQ and QP. Using distance formula, here PT is root 26, TQ root 82, QP root 80. Using the same formula, distance formula, and there is no need to find the square root at all. We can use directly root 26, root 82, root 80. There are three different numbers. It means three sides are not equal to each other. They are different sides, therefore the triangle is scalene. उसने स्क्वायर रूट थोड़ा सा जो निकाला भी है इसलिए करके देखने के लिए कि सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड और नॉट, एंड वी कैन सी इट बाय यूजिंग द लॉन्गेस्ट साइड इज लेस देन सम ऑफ द अदर टू साइड्स और नॉट, देन इट इज ए ट्रायंगल. बट इस क्वेश्चन में ट्रायंगल बनेगा ही बनेगा, बिकॉज 3 पॉइंट है तो आप कहीं ना कहीं ज्वाइन कर ही लेंगे आप उन्हें.
Next, case third, 4 points forming quadrilateral. Point A, B, C and D taken in order form a square if A, B, B, C, C, D, A, D equal. It means all sides are equal and diagonal are also equal. And it is rhombus if all sides are equal but diagonal not equal. And again, if opposite sides are equal, then it may be rectangle, it may be parallelogram. If diagonals are also equal, then it is rectangle, but if diagonals are not equal, then it is parallelogram. You know it. In last class, 9th class, you have also learned this in the characteristics of quadrilateral. If opposite sides are equal, both pair, then it must be a parallelogram. But in parallelogram, if diagonals are equal, then it must be a rectangle. If all sides are equal, then it must be a rhombus, not square. Remember it. First of all, if all sides are equal, in the first case, then we can say it may be a square, it may be a rhombus. So if all sides are equal, first condition में आप उसे rhombus कहेंगे. But when the diagonal are also equal in rhombus, then it must be a square. Okay? तो आप इन बातों का ध्यान रखेंगे. अब हम पढ़ते हैं. Now you can answer these questions. First question, determine if the point this are collinear or not. तो याद होगा आपको collinear के लिए क्या करते हैं? Distance formula यूज करेंगे, distance निकालेंगे, and if the sum of two distance is equal to third distance, then there is collinear point, otherwise no collinear point. Now let's see, do this question. A, B, C, let's name these points. Now we have to find AB using distance formula. Okay, then 2 minus minus 4, 2 minus minus means 2 plus 4. अभी आप सीख चुके हैं, हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं बच्चों, या आप चाहें तो फिलहाल एक बार पूरा करके दिखा देते हैं. 2 minus minus 4 whole square plus 3 minus 3 square. So 2 minus minus मतलब 2 plus 4 6 and 3 minus 3 0. This will be the square of 6 plus 0. The square of 6, the square root of the square of 6. It means it's simple 6. There is no need to write 36 because we have to square root of 36. Therefore, the 6 square, then square root, it must be 6. The distance AB is equal to 6. Whatever the 6 unit is there, centimeter, meter, it is not given, then we can say 6 unit. Next distance, BC, using again the same distance formula. So 0 minus 2 plus 3 minus 3 whole square. This is 2 whole square plus 0. It means the square root of 2 whole square is again simple 2. Now last but not least, AC. AC again using same formula. 0 minus minus 4 means 0 plus 4 you can say. Plus 3 minus 3. Oh, it's very easy. 4 square plus 0, then again the square root of 4 square means 4. आप उसे 16 लिख कर भी square root कर सकते हैं, आप डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हैं. Now we have three distance 6, 2 and 4, and we can easily see 2 plus 4 must be equal to 6 because 6 is equal to, yes, we can write 6 is equal to 2 plus 4. Therefore AB is equal to BC plus AC, and this is the condition of collinearity. It means the points are collinear. ये तीनों बिंदु एक ही लाइन में हैं. All 3 points exist on the same line, therefore points are collinear. You can say that. Now next question. Point is given minus 8 and 5, and we had to find the distance of this point from the x-axis. Remember, on the x-axis, we take x and 0. This is the point on the x-axis because the value of y is always equal to 0 on the x-axis. But now, we have to find the distance, this point from the x-axis, not a point on x-axis. Otherwise, we will get a relationship between unknown x. Okay, let's see by graphical method. This is x-axis, this is y-axis, taking some point 1, 2, 3, 4, 5, and we need to minus 8. Therefore, we are taking on the left hand side, leave the right hand side.
These are point 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Now, minus 8 and 5. Where is the location of minus 8 and 5? You know better. Yes, on the x-axis, see the minus 8 and go in the upwards and downwards. And on the y-axis, see the point 5 and go in the left and right in a straight line. Yes, this one and this one. Where they intersect, this is the point minus 8 and 5. Easily you can see minus 8 and 5. Now, the distance of this point from the x-axis means x वाली line से इसका distance कितना है? Distance means always perpendicular distance. This is this line, then take arrow, otherwise line segment must be occur. Okay, ये technical है, हम इसे x-axis y-axis लिखें और ये arrow का निशान लगाएं. This distance, this point is from y-axis is this distance, and how much is 1, 2, 3, 4, 5 यूनिट. हमने यही लिया इसे, तो सिंपली हम बोल सकते हैं कि द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज 5 यूनिट. देयर इज नो नीड टू सोल्व एनी फर्दर. और ये क्वेश्चन बच्चों आपका 1 मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आना ही आना है, ये समझ ले, मस्त है. अब 1 मार्क्स के क्वेश्चन में कई बार सिर्फ आंसर ही आपको लिखना है, तो आपको कोई जरूरत नहीं है सोल्व करने की. आप ऐसे लिखेंगे, याद रखें किस तरह से. देखें, कोई भी पॉइंट दिया होगा, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बताना है, तो आंसर इज वाई वाला आंसर. यहाँ पे माइनस 8 एंड 5 है, तो वाई एक्सिस की वैल्यू 5 और एक्स का कितना है, माइनस 8. तो व्हेन द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, इट इज द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, दिस इज 5. एंड इफ वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, अभी नहीं पूछा इस सवाल में, आपको वैसे बता रहे हैं. अगर वाई एक्सिस से पूछा जाए कि कितना डिस्टेंस है, तो आप क्या बोलेंगे, जो एक्स की वैल्यू है माइनस 8, बट डिस्टेंस नेगेटिव में नहीं लेंगे, तो आप क्या बोलेंगे, 8 यूनिट. ओके, फिर से सुने, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस 5 यूनिट, वाई एक्सिस से डिस्टेंस इसका कितना हो जाएगा, 8 यूनिट. ये आप याद रखें, बिना सोल्व के भी आप आसानी से शॉर्टकट में कर सकते हैं फॉर 1 मार्क्स के लिए. Otherwise, if you want to do properly using distance formula, then let's see some another way. Because this is the perpendicular and this point where minus 8, this whole point can written as minus 8 and 0. And we have to find the distance using distance formula between these 2 points. Then minus 8 minus minus 8. Yes, we can write minus 8 minus 8 whole square plus 5 minus 0 whole square. Then this is minus 8 plus 5 का whole square, then square root. And this is no doubt 0 plus square of 5. And the square root of square of 5 is again simple as 5 unit, you can say. So it's very simple, very interesting question. Okay, are you getting my point? Good. Next question. There are 1, 2, 3, 4 points are given, and we have to categorize what types of quadrilateral is it. Okay, now let's A, B, C, D, any naming, P, Q, R, S, जो भी आप रखना चाहें. A, B using distance formula, simple एक रफ पिक्चर बना लेते हैं. ओके, एक चीज का आपको ध्यान रखना है बच्चों, जब भी आप ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे, टिक A, B, C, D in a systematic order, means either clockwise or anti-clockwise, whatever you want to say, where A, B, C, D, it's your choice, but it must be either clockwise, again remember, or anti-clockwise. ऑर्डर में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ए कहीं लिख दिया, बी कहीं, अदरवाइज आपको बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा कंक्लूजन करने में. ए बी सी डी इस तरह से हम लिखें, आप कुछ चेंज भी कर सकते हैं, बट ऑर्डर मस्ट बी देयर. ए बी, द स्क्वायर रूट ऑफ x axis means minus 6 minus 9, this will be plus 9. Now we can write directly minus 6 plus 9 whole square plus second point 4 minus 1 whole square. Then this will be 3 square plus 3 square, and no doubt is it 9 plus 9, 18. अभी आपको रूट की करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे कैसा छोड़ें, अंडर द रूट में 18. ओके, दिस इज द वन डिस्टेंस. सेकेंड वन बी सी, 0 minus minus again 0 plus 6 and 2 minus 4 we can write. Then 36 plus 4, the square of minus 2 is always positive. This is 40, root 40. And CD distance, minus 3 minus 0 and minus 1 minus 2, the square of these number, and taking square root using the distance formula, and we can find easily in simple manner
3 whole square 9 and minus 3 whole square again 9. It means 18 under the square root. Oh, AB and CD are equal. Let mark on the picture. AB and CD are equal. It means one pair of opposite sides are equal. Now let's see for other pair. AD is equal to minus 3 minus AD minus 9 minus plus minus 1 minus 1. Oh, it's minus 2. Then taking square root. 36 plus 4 again it is 40. It's very simple. Oh, BC and AD also equal. Mark them. Now, opposite sides are equal in any quadrilateral, then it must be a parallelogram in the first side. एक नजर देखते ही जैसे आपको अपोजिट साइड मिलती है इक्वल है, इट मींस ये पैरेललोग्राम तो कंफर्म हो गया. अब हमें देखना है whether it is rectangle or not. If diagonals are equal, then it must be a rectangle. But if diagonals are not equal, then it is only parallelogram. Clear? So diagonals means AC and BD. इनकी बात करते हैं. Now let's find AC and BD. AC is 0 plus 9 whole square plus 2 minus 1 whole square, then taking square root, and this is 9 square 81 plus 1 82. Okay. And next distance is BD. This will be, oh, this is 9 plus 25 34. Oh, it's not equal. Doesn't matter. AB is equal to CD, BC is equal to AD, but AC is not equal to BD. देखने में प्रॉब्लम है, मैं इसको रेड इंक से कर देते हैं. AC is not equal to BD. It means ABCD quadrilateral is a parallelogram. You can write. अगर हम ऐसा नहीं लिखते हैं तो हम अपना आधा या एक नंबर खो देते हैं. लिखते समय ध्यान रखें, आपको ये सब करने के बाद लिखना भी होता है. जो भी लैंग्वेज में आप एग्जाम दे रहे हैं आप ये जरूर लिखें. तो आज की बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्कशीट आपको लगी होगी प्यारे बच्चों. आप फूलों की तरह हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, गणित में अभ्यास करते रहें, अपने दोस्तों को भी बताएं. कोई बात समझ में नहीं आती है तो हमसे पूछें. चले हमारे साथ. द वे टू सक्सेस ऑन पाथ. स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी. सी यू. बाय बाय.